নমস্কাৰ দুপৰৰ সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাও এটা ব্ৰেকিং নিউজ তেজপুৰত শিশু গৃহৰ পৰা সন্ধানহীন তিনিটাকৈ শিশু খেলিবলৈ গৈ সন্ধানহীন শিশু কেইটা স্নেহবন্ধন শিশু গৃহৰ পৰা সন্ধানহীন তিনিটাকৈ শিশু তেজপুৰৰ লালমাটিত অৱস্থিত এই শিশু গৃহটো স্নেহবন্ধন শিশু গৃহ চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত যাক লৈ এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে কিহৰ ভিত্তিত তিনিটাকৈ শিশু এনেদৰে অকলশৰীয়াকৈ ওলাই গৈছিল বা সন্ধানহীন হ'বলৈ পালে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে খেলিবলৈ গৈ সন্ধানহীন শিশুকেইটা স্নেহবন্ধন শিশুগৃহৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে শিশুকেইটা তেজপুৰৰ লালমাটিত অৱস্থিত এই শিশুগৃহটো যিটো শিশুগৃহ চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম কেনেদৰে এই তিনিটা শিশু সন্ধানহীন হ'বলৈ পালে তাক লৈ এই মুহূৰ্তত বহুজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে তেজপুৰৰ লালমাটিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে স্নেহবন্ধন শিশুগৃহৰ তিনিটাকৈ শিশু খেলিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ আছে তেজপুৰৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সৈতে হেমন্ত সবিশেষ জানিব বিচাৰি জয়ন্ত কালিৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে তিনিটাকৈ শিশু সন্ধানহীন হৈ আছে বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিম চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত স্নেহবন্ধন এই শিশু গৃহৰ পৰা তিনিটি শিশু কালিৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু যাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু লালমাটিত স্থানীয় যি আৰক্ষী চকী আছে লালমাটি আৰক্ষী চকী নিচেই সমীপত এইখন স্নেহবন্ধন শিশু গৃহ গতিকে তেনে অৱস্থাত আৰক্ষী চকী হেমন্ত শিশুগৃহ চৌহদতে খেলি আছিল নে চৌহদৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈ খেলিবলৈ গৈছিল তিনিটা শিশুৱে জয়ন্ত আমি প্ৰাপ্ত তথ্য মতে শিশুকেইটি প্ৰথম অৱস্থাত শিশু গৃহৰ ভিতৰতে খেলি আছিল তাৰপিছত শিশু গৃহৰ বাহিৰলৈ আহিছিল কিন্তু কি পৰ্যায়ত কেনেধৰণে শিশুকেইটি ৰহস্যজনকভাৱে অন্তৰ্ধান হ'ল বা সন্ধানহীন হৈ আছে অন্তৰালত কিবা অপহৰণৰ ঘটনা জড়িত থাকিব পাৰে নেকি আৰক্ষীয়ে কি কৈছে প্ৰাথমিক তদন্তত হয় এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে তেখেতসকলে বিশেষ একো ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিব নিশ্চিতভাৱে শিশুকেইটি দৰাচলতে তেনেধৰণৰ ঘটনা অন্তৰালত থাকিব পাৰে বা স্নেহবন্ধনৰ কিবা বিষয়ববীয়াই কিবা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে হয় আমি যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় ধন্যবাদ হেমন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু হেমন্তৰ হাতত যেহেতু বৰ বিশেষ এটা তথ্য নাই কাৰণ এতিয়ালৈকে গোটেই কথাখিনি যদি চাওঁ তেজপুৰৰ শিশু গৃহৰ পৰা তিনিটিকৈ শিশু সন্ধানহীন হৈছে স্নেহবন্ধন শিশু গৃহৰ পৰা শিশুকেইটা সন্ধানহীন হৈছে তেওঁলোকে খেলি আছিলে খেলি থকাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে লালমাটিত আছিলে এই শিশু গৃহটো আৰু এই শিশু গৃহটো চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত আৰু ইফালে দবকাৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত অঘটন সংঘটিত হৈছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে 9জন যুৱকে কেন্দ্ৰটোৰ বাথৰুমৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি পলায়ন কৰিছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত আছিল 15জনকৈ ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক দবকাৰ ভগীৰাম গাঁৱত আছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটো নৰ্থ ইষ্ট ৰুৰেল ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিয়ে চলাইছিল কেন্দ্ৰটো পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে দবকাৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছে 9জন যুৱকে কেন্দ্ৰটোৰ বাথৰুমৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি পলায়ন কৰিছে এই বাথৰুমৰ এনেধৰণে গ্ৰিল ভাঙি পলায়ন কৰিছে 15জন ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক এই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত আছিল দবকাৰ ভগীৰাম গাঁৱত আছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰুৰেল ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিয়ে চলাইছিল এই কেন্দ্ৰটি ফোন আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আবুল কালামৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আবুল গোটেই কথাখিনি জনাম যে কেনেকৈ পলায়ন কৰিলে গ্ৰিল ভাঙি পলায়ন কৰিলে সেয়া ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ উপৰি তাত সুৰক্ষা বা নিৰাপত্তা এনেকুৱা ধৰণৰ দিশবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অকণমান জনাব যোৱাকালি এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আজিহে পোহৰলৈ আহিছে আৰু ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰথম অৱস্থাত মুখ খোলা নাছিলে তাৰপিছত আৰক্ষীৰ পৰা যোগাযোগ কৰাৰ পিছতে ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে আৰু ইতিমধ্যে 15জন নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত 15জন লোক আছিলে যুৱক আছিলে 15জনৰ ভিতৰত 9জন পলায়ন কৰিছিলে আৰু খন্তেক সময় খবৰ পোৱা মাত্ৰে এজন যুৱকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰে প্ৰকাশ পাইছে আৰু ক'ব লাগিব যি গ্ৰিল আছিলে গ্ৰিলটো হয়তো মজবুত আছিলে কিন্তু কেনেকা ধৰণৰ কি পৰিস্থিতি ভাঙিলে বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰিল আঁতৰাই পুনৰ ৱাল কৰি দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত ফটো আহি পৰিছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব হোজাই জিলাৰ বা মধ্য অসমৰ হোজাই জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ
নিচা আসক্ত যুৱকক এইখন কেন্দ্ৰত ৰখা হৈছিলে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰখা হয়। কিন্তু দেখা গৈছে কটকটীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে যদিও কটকটীয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাঙি গুচি গ'ল তেওঁলোকে গম নাপালে, ইয়াক ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কৰ্তৃপক্ষই এই ক্ষেত্ৰত মুখ খোলা নাই। পাপৰি আব্দুল ধন্যবাদ জানাইছো। কৰ্তৃপক্ষ মুখ খোলা নাই আৰু নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ধাৰাবাহিকভাৱে আমি যদি চাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। ক'ৰবাত যদি নিশা মাৰধৰ কৰি হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ক'ৰবাত তেনেধৰণে পলায়ন কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কৰ্তৃপক্ষসকল যিমান তেওঁলোক আচলতে কঠোৰ হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণৰ কঠোৰ যেন হোৱা নাই, তেনেকুৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ক'ৰবাত যদি কঠোৰ হৈছে, বেছিকৈ হৈছে বা কৰ্তৃপক্ষ হয়তো গুৰুত্ব প্ৰদান নাই কৰা, তাত ৰখীয়া মানুহে বেছিকৈ গুৰুত্ব লোৱা বা দায়িত্ব দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিয়ে নহওক আমি পুনৰ কৈছোঁ, ডবকাৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে। লোকসভাৰ এথিক্স কমিটিত হাজিৰ টিএমচিৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ। কেছ ফৰ কুৱেশ্যনৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত সাংসদগৰাকীক সোধা পোছা। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত লোকসভা এথিক্স কমিটিত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল সাংসদগৰাকীক। ধনৰ বিনিময়ত লোকসভাত মহুৱা মৈত্ৰই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ অভিযোগ আনিছিল। প্ৰথমে 31 অক্টোবৰত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও 5 নৱেম্বৰৰ পিছতহে হাজিৰ হ'ব পাৰিব বুলি আৰ্জি দিছিল মহুৱা মৈত্ৰই। কিন্তু এথিক্স কমিটিয়ে 2 নৱেম্বৰত হাজিৰ হ'বলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেই অভিযোগ কৰিছিল যে ব্যৱসায়ী দৰ্শন হীৰানন্দানীৰ পৰা উৎকোচ লৈ আদানী গ্ৰুপক লক্ষ্য কৰি লৈছিল তৃণমূলৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই। নিশিকান্ত দুবেই এই অভিযোগ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত লোকসভাৰ এথিক্স কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই সন্দৰ্ভত মহুৱা মৈত্ৰ এথিক্স কমিটিত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল আৰু যাৰ পিছত এতিয়া হাজিৰ হৈছে। বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে এইগৰাকী বিতৰ্কিত সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰক। देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है और ये मामला ऑनरेबल एथिक्स कमेटी के सामने है। मेरा इस विषय पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं रहेगा, तो मैं इस विषय पर अभी कुछ भी नहीं कहना चाहता। उनका राइट है, कमेटी का राइट है डिसाइड करना कि क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। ना मैं, ना आप, ना कोई तीसरा व्यक्ति बता सकता है कि कैसे होना चाहिए कमेटी का काम। वो तो सिर्फ कमेटी तय करेगी, तो उसमें मेरी तो कोई टिप्पणी नहीं है उस पर। एथिक्स कमेटी के सामने जो प्रोसेसिंग चल रही है, क्या आप उससे खुश हैं? नहीं, देखिए, खुश और ना खुश होने का कोई सवाल नहीं है। ये मामला बहुत गंभीर है, सीरियस इशू है और मैं केवल সংসদত সুধিছে। পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ৰ 9টা প্ৰশ্ন তেওঁ কৰিছে। বিত্ত মন্ত্ৰণালয়েৰে জড়িত 8টা প্ৰশ্ন, এনেদৰে মুঠ 62টা প্ৰশ্ন তেওঁ ইতিমধ্যে সংসদত কৰিছে আৰু গুৰুতৰ অভিযোগ মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কেছ ফৰ কুৱেশ্যনৰ এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত আজি এথিক্স কমিটিৰ মুখামুখি হৈছে মহুৱা মৈত্ৰ। ৰাজীৱ চক্ৰৱৰ্তী আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয়। গতিকে আজি যেহেতু এথিক্স কমিটিত হাজিৰ হোৱাৰ কথা আছে, গতিকে আমি সেই সন্দৰ্ভত জানিম। राजीव, इस बारे में थोड़ा जानकारी हमें चाहिए, क्योंकि एथिक्स कमेटी में जाने की जो बात हो रही है उस बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताएंगे। देखिए पापड़ी, मैं आपको बता दूं कि जो आरोप है महुआ मौर्य जो टीएमसी का सांसद है, उनके खिलाफ जो आरोप है वो बहुत ही गंभीर है। क्योंकि ये कैश फॉर क्वेरीज जो है, ये हमने देखे हैं पहले पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज का जो मेंबरशिप है वो चले गए थे इस कारण, और इसी कारण का जो आरोप है महुआ मौर्य के खिलाफ आए। लेकिन जो अदानी के खिलाफ सवाल पूछने का पार्लियामेंट में और जो दूसरे एक व्यवसायी है उसको सुविधा पहुंचाने का आरोप है, और इसी में जो एथिक्स कमेटी है वो एक्टिव है और उन्होंने मीटिंग बुलाया था। उनकी मीटिंग में आज गए हैं महुआ मौर्य। पिछले बार जो जिसने आरोप किया है भाजपा का सांसद निशिकांत दुबे, उनका बात सुना गया। आज महुआ मौर्य का बात भी सुना जाएगा। और जो मैं आपको बता दूं कि महुआ मौर्य जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि जो आरोप लगाए हैं जो निशिकांत दुबे,
वो उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। महुआ मोइत्रा का बात जो है वो उनके पार्टी जो है टीएमसी, वो उनके साथ इस दौरान हम देख रहे हैं कि खड़े नहीं है। टीएमसी का बोलना है, टीएमसी कुछ मतलब सामने आके कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो पार्टी के लीडर है, जो हमें मतलब अपना नाम नहीं बताने का शर्त पे जो बताए हैं, वो है कि महुआ मोइत्रा अपने ही मर्जी से ये सब किए हैं, पार्टी का इसमें कुछ लेना मतलब देना राजीव, हम नहीं ये है। बता सकते हैं तो कि जो महुआ मामला मोइत्रा के साथ जो अपने मसला ही है, पार्टी जो के लोग नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि महुआ मोइत्रा देखिए बंगाल में इस वक्त जो है इंडस्ट्री चाहिए, गवर्नमेंट का नज़र है इंडस्ट्री पे, और इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी है, उसमें अदानी का बहुत सारे प्रोजेक्ट बंगाल में आने वाले हैं, होने वाले हैं। इस दौरान अगर मतलब महुआ मोइत्रा के कारण वो रिलेशन खराब हो जाए टीएमसी के साथ, सरकार के साथ, टीएमसी सरकार यहाँ आप जानते हैं 10 साल 12 साल से चल रही है यहाँ, उसके ऊपर अगर ये महुआ मोइत्रा के कारण वो खराब ना हो, ये टीएमसी का सोच है। और टीएमसी चाहते हैं कि महुआ मोइत्रा जो किया है, अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिले, अगर वो नहीं दोषी है तो उसको मतलब बरी किया जाए और उसके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो वापस लिया जाए। यही टीएमसी का स्टैंड है। इसीलिए टीएमसी पार्टी से कोई भी लीडर इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन महुआ मोइत्रा आज गए हैं और उनका कहना है कि इस आरोप के बारे में खुद महुआ ने कुछ रिएक्शन दिया है राजीव? आज खास करके आज जब एथिक्स कमेटी का आमना सामना करने के लिए आई है, तो उस समय कुछ बयान दिया है संवाद माध्यम को? देखिए, वो मीडिया के सामने आज नहीं आई है, और ना तो वो मुझे लगता है कि वापस जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद भी देंगे, क्योंकि आप जानते हैं एथिक्स कमेटी का एक अपना हिसाब है। एथिक्स कमेटी में क्या हुआ है और क्या उनको सवाल पूछा गया, वो बाहर आके आप नहीं बोल सकते। महुआ मोइत्रा भी नहीं बोलेंगे, लेकिन मीडिया वाले पूछेंगे और मीडिया का सवाल का सामना वो करेंगे। वो हो सकता है कि गोल गोल करके कुछ जवाब दे, लेकिन जाने से पहले आज वो कुछ नहीं बोले हैं और नहीं मुझे लगता है कि बोलेगा। लेकिन क्या है कि देखिए, जो आरोप है वो इतना गंभीर है। इस आरोप अगर सच है तो महुआ मोइत्रा तो जी राजीव, बहुत ही बड़ा आरोप है ये। अगर इस आरोप का कुछ प्रमाण एथिक्स कमेटी को मिलता है, तब क्या पनिशमेंट हो सकता है महुआ मोइत्रा की? देखिए, अगर कोई भी मतलब ये अगर साबित हो जाए जो आरोप है ये सच है, तो महुआ मोइत्रा का जो मेंबरशिप है वो जा सकते हैं जी। हालांकि मेंबरशिप जाने का टाइम जो है, आप अगर देखेंगे कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं कुछ ही महीने में, तो उसका मतलब ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छवि है टीएमसी का वो खराब हो जाएगा टीएमसी का, क्योंकि जो हम इस हिस्ट्री में देखेंगे, कैश फायर क्वेरी के कारण देश में जो पार्टी बदनाम है उस लिस्ट में टीएमसी का नाम आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि आप 2024 में जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं इंडिया, मतलब हम ये सोच सकते हैं कि टीएमसी को ये पता है, क्योंकि उसके ऊपर एक जो कि छाप पड़ेगा, मतलब जो इमेज है वो इमेज खराब होगा, और इसी वजह से टीएमसी पहले ही अपने पार्टी के लोग, अपने पार्टी ही महुआ के साथ नहीं है। आरोप गंभीर है, सख्त है, और कार्रवाई भी सख्ती से होगी। तो इस मामले में सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो यह है राजीव, अभी पार्टी ही महुआ के साथ नहीं है। उन लोगों ने कहा है कि अगर उसने किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं किया है तो खारिज हो जानी चाहिए। क्लियर बात पार्टी की तरफ से है ना? जी बिल्कुल। देखिए, टीएमसी इतने बड़े पार्टी है, इतने साल से बंगाल में पावर में है। एक लीडर है बॉबी हाकिम, फिरहाद हाकिम, जो कलकत्ता का मेयर है। उन्होंने बताया कि पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि ये भाजपा ने किए हैं, मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। महुआ मोइत्रा उनको दबाने के लिए ये किया गया है। लेकिन पार्टी का जो आप देखेंगे, जो और लोग हैं, जो लोग रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुद ममता बनर्जी हो, उनकी भतीजा अभिषेक बनर्जी हो, कोई भी लीडर एक भी बात महुआ के लिए नहीं बोले हैं। और महुआ मोइत्रा भी टीएमसी को बार बार लेके बात कर रहे हैं। अगर लास्ट बाइट जो हमको दिए हैं, हम देखे हैं कि वो राहुल गांधी, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, इन लोगों के बारे में बोल रहे हैं, पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन वो पार्टी के बारे में बोल रहे हैं बार बार कि टीएमसी का गला दबाया जा रहा है। लेकिन टीएमसी इस मामले में चुप है, और ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है कि महुआ मोइत्रा कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। और उसका आज चुनौती है
क्योंकि वो एथिक्स कमेटी के सामने आज गए हैं, वो चुनौती उनको पार करना होगा। देखते हैं अभी क्या होता है। जी राजीव, वो जो एथिक्स कमेटी है बीजेपी के अलावा और कौन कौन सी पार्टी का कितने सदस्य इस एथिक्स कमेटी में है? देखिए, एथिक्स कमेटी बनाया गया है, हर पार्टी का मेंबर है जी और रहता है, लेकिन भाजपा जब पावर में है तो उनका मेंबर ज्यादा है जी। तो एथिक्स कमेटी बहुत दिन से मीटिंग नहीं हुई थी। एथिक्स कमेटी के सामने बहुत गंभीर इशू और भी है, लेकिन महुआ मोइत्र के खिलाफ जो आरोप लगा है वो इतना गंभीर है, तो एथिक्स कमेटी एक्टिव होके इनको संज्ञान में लिया और मतलब जल्दी मीटिंग बुलाए हैं। और एक बार मीटिंग हो गया है, दूसरी बार महुआ मोइत्र को बुलाया गया था, उन्होंने टाइम मांगा, वो टाइम उनको पूरी तरह नहीं देके 2 दिन पहले महुआ मोइत्रा 5 नवंबर तक टाइम मांगा था, लेकिन उनको आज बुलाया गया 2 तारीख। एथिक्स कमेटी में हर पार्टी का लोग है, हर पार्टी का मेंबर है और वो सब मिलके एक डिसीजन में आएंगे। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि आरोप जो है वो छोटा मोटा नहीं है। मतलब आप किसी एमपी के बारे में गलत शब्द बोल दिए, प्रधानमंत्री के सामने कुछ गलत शब्द बोल दिए, उसके लिए माफी मांग ले, पार्लियामेंट में अनपार्लियामेंट्री कुछ बिहेव कर ले, वो अलग चीज है। लेकिन आपका पार्लियामेंट्री जो आपका लॉगिन आईडी है वो दुबई में बैठ के कोई खोलता है, उसका कंट्रोल करता है, वो तो मतलब बहुत ही खतरनाक एक आरोप है। और आप पैसे लेके सवाल पूछते हैं एक बिजनेसमैन के लिए। बिल्कुल बड़े ही खतरनाक आरोप है और गंभीर है, आरोप भी गंभीर है। कोई दुबई से आपको लॉगिन कर रहा है तो ये भी बड़ी आरोप है, इल्जाम बहुत बड़ा है, लेकिन देखते हैं आगे होता क्या है। जो भी हो, आपको शुक्रिया राजीव, अपना धन्यवाद जनाइए। আৰু এফালে মহুৱা মৈত্ৰৰ এই বিতৰ্ক অব্যাহত আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা হয় আম আদমি পাৰ্টিৰ বিপদ এই মুহূৰ্তত সন্মুখত। কাৰণ অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আজি জেৰা চোৱাৰ কথা আছিল, যদিও অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আজি ইডিৰ সন্মুখীন নহল, তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশলৈ গৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু দিল্লীৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ইডিয়ে চলাইছে বৃহৎ অভিযান। কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ আনন্দৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছে। ৰাজকুমাৰ আনন্দৰ বাসগৃহৰ লগতে 9টাকৈ স্থানত অভিযান চলাইছে ইডিয়ে। কেজৰিৱালৰ জেৰাৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ আনন্দৰ বাসগৃহত পুৱাৰে পৰা চলিছে ইডিৰ এই বৃহৎ অভিযান। হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন সৰবৰাহৰ অভিযোগত ইডিয়ে চলাইছে এই অভিযান। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। সংস্থাপিত অকলেই কৰিছে, গোপনে কৰিছে, গতিকে তাৰ ফলশ্ৰুতিত কোনো ধৰণৰ যি ক্লু পোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ এক প্ৰকাৰ বন্ধ ৰাখিবলৈ, সেই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। কাৰণ যি কাম কৰিছে তেওঁ অকলেই কৰিছে, তেওঁক এক প্ৰকাৰ লোন উল্ফ বুলি ক'ব পৰা যায়। এতিয়া কিয় কৰিছিল তেওঁ সেই কাম? প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু এক কুটাঘাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্য বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল, কাৰণ শনিবাৰৰ দিনটোত কেৰেলাৰ মল্লপুৰম জিলাৰ এখন সভাত হামাছৰ এজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতাই কাটাৰৰ দোহাৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগে তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল। উপস্থিত আছিল ভাৰতীয় লোকসকলক ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে বা পেলেষ্টাইনৰ সপক্ষে জেহাদ ঘোষণাৰ তেওঁ আহ্বান জনাইছিলে। গতিকে সেই ঘটনাটোৰ সৈতে কালিৰ বিস্ফোৰণক, দেওবাৰৰ বিস্ফোৰণক সংলগ্ন কৰা হৈছিল। কিন্তু পিছত এওঁ যেতিয়া দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে, যদিও সেই দিশতো তদন্ত কৰি থকা হৈছে, এওঁ যেতিয়া দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে এটা ডাঙৰ লিড পোৱা গ'ল। আৰক্ষীয়ে এওঁৰ এই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে। এতিয়া কিয় কৰিলে? সেই যি ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান পৰিচালিত হৈ আছিলে, 3দিনীয়া ধাৰ্মিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে, শেষৰটো দিন আছিল দেওবাৰে, আৰু যিসকল লোকে সেই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিলে প্ৰায় 2000ৰ পৰা 2500 লোক, তেওঁলোক হৈছে এক বিশেষ ধৰ্মৰ চিন্তাৰে পৰিচালিত লোক। তেওঁলোকক কোৱা হয় জেহোবা উইটনেছ বুলি, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কমিউনিটিটোক কোৱা হয় জেহোবা উইটনেছ বুলি। খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰে এক অফচুট বুলি ক'ব পৰা যায়। 1870 চনত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পেনচিলভেনিয়াত আৰম্ভ হোৱা
এক ধাৰ্মিক আন্দোলনৰ যোগেদি এই পন্থাৰ আৰম্ভ হৈছিলে বাইবেল ৰিফৰ্মিষ্ট মুভমেণ্ট বুলি ক'ব পৰা যায় বা বাইবেল ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট যি আৰম্ভ হৈছিলে ৰাছেল নামৰ একজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত তেতিয়াৰ পৰাই এই পন্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে বিশেষকৈ মূলসূত্ৰিৰ খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ লোকসকল যেনে ধৰণে পৰিচালিত হয় তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী যি ধৰণৰ বা তেওঁলোকৰ যি বিশ্বাস বিলিফ ছিষ্টেম যি ধৰণৰ ঠিক তেনে ধৰণৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ বিলিফ ছিষ্টেম নহয় তেওঁলোকৰ বিশ্বাস ভগৱান প্ৰাপ্তিৰ যি দিশ সেই দিশ মূলসূত্ৰিৰ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলকৈ পৃথক মন কৰিব এওঁলোকে বৰদিন উদযাপন নকৰে এওঁলোকে গুড ফ্ৰাইডে উদযাপন নকৰে এওঁলোকে ইষ্টাৰ উদযাপন নকৰে মূলসূত্ৰিৰ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে যি ধৰণে এইকেইটা উৎসৱ উদযাপন কৰে এওঁলোকে কিন্তু নকৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে এওঁলোকৰ 87 লাখ লোক আছে বিভিন্ন বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত এওঁলোকৰ উপস্থিতি বা অৱস্থিতি পোৱা যায় তাৰ সমান্তৰালকৈ এওঁলোকে এই ধৰ্মৰ চিন্তাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা লোকসকলে সেনা বাহিনীত যোগদান নকৰে চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান নকৰে বা মূলসূত্ৰিৰ লোকসকলৰ পৰা কেৱল খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ লোকসকলেই নহয় মূলসূত্ৰিৰ আন লোকসকলৰ সৈতেও এওঁলোকৰ যি এক সমাগম বা এওঁলোকৰ যি সংযোগ সেই সংযোগ যথেষ্ট কম আৰু এওঁলোক যি এক ৰাষ্ট্ৰীয় দেশক ভাল পোৱাৰ যি এক প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতাৰ পৰা এওঁলোক দূৰত থাকে 1986 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক গোচৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যি নেশ্যনেল এন্থেম সেই এন্থেম নুগুৱাৰ এক নিৰ্দেশ এওঁলোকে লাভ কৰিছিল এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল সেই গোচৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট পাইছিলগৈ বিশেষকৈ আমাৰ যি নেশ্যনেল এন্থেম সেই জনগণ মন তেওঁলোকে গোৱা নাছিলে যাৰ কাৰণে এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আৰু নুগুৱাৰ অনুমতি বিচাৰি এওঁলোক উচ্চতম ন্যায়ালয় পাইছিলগৈ 1986 চনত আৰু আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত সেই সংগীত নুগুৱাৰ यादों के सफर का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আজি ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন নহয় দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণলৈ যাব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী পুনৰ সমনৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিব ইডিয়ে দিল্লী ফুৰা কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল কেজৰিৱালক 30 অক্টোবৰত জাননী যোগে আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল কেজৰিৱালক আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যাব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজি যেহেতু ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল ইডিৰ সন্মুখত জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা আছিল গতিকে তাকে লৈ যেহেতু চৰ্চা চলি আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পোৱা খবৰ অনুসৰি যে আজি ইডিৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন নহয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ নাযায় তাৰ বিপৰীতে তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যাব মধ্যপ্ৰদেশলৈ যাব আৰু ছত্তীশগড়লৈ যাব का ये ANI का ट्वीट है एपिसोड 110 विद मनोज तिवारी प्रीमियर्स टुडे एट 5 PM IST और ये ट्वीट है 11:38 29 अक्टूबर 2023 ये मैं चला देता हूं आपको सुबह की चड्ढा जी और अरविंद केजरीवाल जिन दोनों लोगों को जेल जाने से कोई रोक ही नहीं सकता उनको हम पॉलिटिकल पार्टी तो अब नहीं कह सकते वो पॉलिटिकल तो ये सवाल मेरा नहीं था ये सवाल ANI की स्मिता प्रकाश जी का था कि आपको कैसे पता कि वो जेल जाएंगे और ये जब प्रकाशित हो रहा है ये 11:48 पे 29 तारीख को सुबह प्रकाशित हो रहा है जाहिर सी बात है कि उससे पहले रिकॉर्ड हुआ होगा और उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा जिस स्टेटमेंट को उन्होंने पकड़ के पूछा कि आपको कैसे पता कि वो जेल जाएंगे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनोज तिवारी जी को पता था कि ईडी अब अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन देके गिरफ्तार करेगी इसका मतलब जो पटकथा है जो स्क्रिप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी जाती है ईडी का इन्वेस्टिगेशन का मेरिट का सबूतों का कोई लेना देना नहीं है ईडी सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग ये जो आरोप लगाया वो बेसलेस है और जो लेटर जो जमा किया गया तो लीक किया गया नहीं कौन है ईडी के सूत्र मनोज तिवारी हैं कौन अफसर है ये सूत्र का कोई मतलब नहीं
हमें बताएं कौन। आगे आपने कहा कि लीगल टीम तय करेगी, लेकिन जो लेटर में भी जवाब दिया है ईडी को सीएम ने, उन्होंने ये कहा है कि ये गैर कानूनी है। तो एक तरह से आप इशारा भी कर रहे हैं कि कानूनी रास्ता तो आप अपनाएंगे, क्योंकि अगर ईडी ये कहती है कि दोबारा सबक भेज रहे हैं तो आपके सामने कानून के अलावा कोई रास्ता तो बचता नहीं है। देखिए ये जो है कानून का रास्ता है आपके पास। ये लीगल टीम जो है मुख्यमंत्री जी की, वो उन्हें एडवाइस करेगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। गुप्ता जी आइए। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि आज धरने और ड्रामे का समय नहीं है। आज अपने दायित्व को निभाने का समय है, जांच में हिस्सा बनने का समय है, विक्टिमहुड कार्ड नहीं भ्रष्टाचार का रिपोर्ट कार्ड देने का समय है। और जो पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर हुआ, आज वो पार्टी आईएसी से हटकर जेएफसी बन चुकी है। जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन हो रहा है। मतलब सोचिए कि जो लोग कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, आज जब सुप्रीम कोर्ट राहत नहीं देता, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट राहत नहीं देता, करप्शन के प्रमाण सामने आ चुके हैं, तो कभी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं और फिर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये शक्ति प्रदर्शन का नहीं, ये भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप। और बताइए कि क्या लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को राहत नहीं देता तो कोर्ट विद्वेष की भावना से काम कर रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे खुद कांग्रेस पार्टी आपकी सहयोगी ने कहा है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, उसको तो गिरफ्तार करना चाहिए। और इस मामले में, शराब घोटाले के मामले में उसने घूस ली है। ये अजय माकन से लेकर अनिल चौधरी और बाकी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने वक्तव्य दिया है। क्या वो भी वेंडेटा? দুপুৰৰ সংবাদত জনাও এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীত পুনৰ সন্ধানহীন শিক্ষাৰ্থী, 3 দিন ধৰি সন্ধানহীন 10ম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ। সন্ধানহীন ছাত্ৰজনৰ নাম চন্দ্ৰগুপ্ত মণ্ডল। ঘৰৰ পৰা কোচিঙলৈ গৈ থকাৰ পথত সন্ধানহীন হয় ছাত্ৰজন। নেপালী মন্দিৰৰ ওচৰৰ পৰা সন্ধানহীন ছাত্ৰজন। বৰলুত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পিতৃ বিকাশ মণ্ডলে। লাখ টকীয়াৰ টিপ টিপ গলিত আছে কোচিং চেণ্টাৰটো। এই কোচিং চেণ্টাৰটোলৈ যোৱাৰ পৰাই আজি 3 দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছে 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন।